ओके दोस्तों हम अब चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 10 को हमने कंसोलिडेट किया हुआ है इनटू द मेन पार्ट्स, राइट। चैप्टर 10 के अंदर अगेन आई वांट टू रिपीट, दिस इज द ट्रेनिंग फॉर CompTIA पार्ट 1 चैप्टर 10. It is being done by J's Tech and Travel by Loyal Tech and Security. अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ विजिट अस ऑनलाइन एट loyaltechsecurity.com। वेबसाइट हमारे अबाउट अस पेज में भी है। इंशाल्लाह आफ्टर दिस वीडियो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा आज प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो so let's continue. Chapter 10 is regarding understanding mobile devices. और इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। 3.4 we will explain the characteristics of various types of other mobile devices, which is tablets, smartphones, wearable technology, which is smartwatches, fitness monitor, glasses, and headsets. Phablets, what are those? E-readers, smart camera, and GPS. In 3.5, we will compare and contrast accessories and ports of other mobile devices. The connection type will include NFC, proprietary vendor-specific ports, microUSB and miniUSB, Lightning port, Bluetooth, IR, Hotspot, tethering, accessories के अंदर headsets, speakers, game pads, docking stations, extra battery pack, or battery chargers, protective covers, waterproofing, credit card readers, and memory microSD. इन सब चीज़ों के अंदर we do have several things to show you, which we will cover in the practical part after this video. The ones such as the game pads and a few other things which we don't have, then we will cover that onto the video on the browser. Okay, so let's continue. Characteristics of mobile device. Field servicing and upgrading, that's one of the characteristics. Uska input method and secondary storage. What is a field service and upgrade? It has been shown that users are not averse to giving up expandability and replaceable parts as long as functionality and convenience outshine the loss. Basically, it's saying that people are not too keen to upgrade to new technologies because there's a learning curve. There is a they're already comfortable using certain products, so sometimes they feel like I don't want to move forward with the next product. So and that's the reason why वो convenience को पहले ले लेते हैं, but they lose a lot of other technologies. Now Android, and which is a non-Apple device, use a removable memory and batteries that can be changed. आप सबको पता होगा जिसके पास भी Android phone है, most of the Android phones, I don't want to say all, but most of the Android phones, you can change the batteries. You can just take the cover out, you can replace the battery, and you can also plug in the memory in that. But Apples are not designed that way. Apple, whatever the pre-configured hard drive SS hard drive, the disk space lagi hui hai, you cannot upgrade that. You cannot upgrade the memory. You cannot change the battery, at least not that easily. There are ways to change battery on Apple, but you need special tools. Whereas Android, you can just slide that cover off and you can change the battery. Now, to service closed mobile devices of any size, it may be necessary to seek out an authorized repair facility and take or send your device to them for service. जैसे मैंने बताया, आपको या तो एप्पल के सर्विस के अंदर भेजना पड़ता है ऐसा मोबाइल डिवाइस, या तो फिर
आपको किसी इंडिविजुअल सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है, एंड यू कैन गेट दैट फिक्स ओवर देयर. इफ़ यू अगर आप खुद करना चाह रहे हैं आप खुद भी कर सकते हैं, बट यू नीड स्पेशल टूल्स फॉर दैट, विच इज़ द आईफोन. आईफोन को खोलने के लिए स्पेशल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. इनपुट मेथड्स. नाउ ड्यू टू size increase interaction is difficult, but modern technology allows for some pretty convenient methods of user input, which is multi-touch, more than one contact point, which is kind of like your LCD screen. That is one of the input methods. Secondary storage. No spinning disks. Must survive more brutal conditions than laptop, pocket devices, and SSDs. Higher capacity versions of these cards are SDHC, SDXC, वो जो मिनी SDHC आते हैं, micro memory cards आते हैं. If you guys remember, let me just quickly bring that up for you so it jogs your memory. Let me see, where is... तो अगर आप लोगों को पता हो ये SDHC एंड SDXC कार्ड्स हमने पढ़े थे. दिस इज़ ए टर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज जो काफ़ी एंड्रॉयड फ़ोन्स में आप लगा सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये वाले नहीं लगते हैं. अब तो यू वुड पुट मिनी SDHC कार्ड्स, विच इज़ दीज राइट हियर. छोटे जो माइक्रो SD होते हैं ना, microSD and AD. So these are parts of the secondary storage you can put into the cell phones. The standard version can hold up to 4 GB, but HC versions are up to 32 GB, and XC, जो XC लिखा हुआ होता है ना, SDXC, वो up to 2 TB की storage handle कर सकता है, जिसके अंदर लास्ट में लिखा हुआ है SDHC. जो HC लिखा हुआ होता है वो अप टू 32 GB को होल्ड कर सकता है. So these are the secondary storage devices used in mobile devices. Types of mobile devices. Tablets. First commercial tablet was a MS-DOS based tablet, and let me see, we do have a picture for that, which I don't want to pull it up. So ये है ग्रिड पैड टैबलेट 1989 की. उस ज़माने के हिसाब से बहुत ही एडवांस थी. 1989 के अंदर यू हैड अ टच स्क्रीन टाइप tablet, but it's not a finger touch screen. You have to use there's a special pen for that. Okay, and then उसके बाद 2006 में HP की tablet आई थी. This was also a form of touch screen using the pen, you know. So this was also considered the tablets of 2006. Then after that we had smartphones. So let me cover the smartphones in a minute. Let me do the touch screen real quick. So ये जो मैंने अभी पिक्चर बताई आपको, let's just go off of this. So 2006 के अंदर HP came up with this type of touch screen, you know, which uses a stylus or hard object pen, which जो आपको ये दिख रहा है pen, you would use that, which responds to a pressure. उस screen के ऊपर pressure लगेगा तो then it would realize that there is a touch sensitivity, and then it would open up a page. In this case, this is a Windows XP on this tablet. In order to open up, आप थोड़ा सा press करेंगे start के ऊपर with this pen and it will open. It is a different technology because it uses the pressure to identify कि आप कहाँ पे touch कर रहे हैं. Okay. They are highly accurate in detecting the position of the touch and capacitive.
But the capacitive are a little less accurate but more responsive. They respond to changes in electrical currents, and as such, the human fingertip works great as the facilitator of input. You can also find keyboard accessories that attach to the tablets. आप tablets के अंदर keyboards भी लगा सकते हैं, जैसे ये पीछे पड़ा हुआ है keyboard, वो भी लगा सकते हैं. पर जो फिंगर जो हम ह्यूमन की जो फिंगर से जो टच करके हम स्मार्ट टैबलेट्स को जो हम यूज़ करते हैं, it works off of a technology called it's called a capacitive touch, so which works on इलेक्ट्रिकल करंट जो स्क्रीन के अंदर चेंज होते हैं टच करने के बाद, उसके बेस के ऊपर वो आपकी टैबलेट की टच स्क्रीन चलती है. द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज जो कैपेसिटिव जो मेथड है टैबलेट्स का, इट्स मच मोर रिस्पॉन्सिव, मीनिंग कि आप हल्का सा टच करेंगे इट विल बी वेरी रिस्पॉन्सिव. Okay. Okay, sorry. All right, so हम कहाँ थे? Smartphones पे थे, right? Smartphones, most popular computer device in the world today. Any mobile phone with its own processor and operating system can be considered a smartphone. सबसे बड़ी एग्जांपल इसके अंदर है आईफोन. आईफोन जो है 2007 में आया था. If I'm not wrong, let me pull that up. ये BlackBerry, actually, you know what? Sorry, Blackberries जो थे पुराने, they were also considered somewhat of a smartphone. The reason being is that BlackBerry के खुद के processors जो थे, they had the phone itself had the processor, और BlackBerry का खुद का operating system भी था. So you can consider a BlackBerry a smartphone, even though it was not fully touch at that time. But this right here, what you see, would be a smartphone. A little bit an outdated smartphone, but yes, it would be considered a smartphone. And then after that, 2007 के अंदर, as you can see, iPhone came up with the iOS 1. iPhone revolutionized the entire industry in smartphones. Not only because they were touchscreen, they pioneered the entire app industry. ये जो app का जो concept आया है ना, we talk about app development, we talk about small apps. The entire concept literally came from that iPhone introducing individual apps onto their phone. So 2007 के अंदर iPhone आया with the iOS 1 version. उसकी size काफ़ी small थी, but it did pretty good. Back then 4 GB was a good decent space. Processor उसका खुद का लगा हुआ था. उसके अंदर up to B and G का internet चलता था. Camera at that time was not bad on the phone. So this was a huge hype. 2007 iPhone boom was a big deal. उसके बाद, as you can see, iPhone 10, iPhone iOS 4, 6, 8, and so on and so forth. अभी iPhone 14 came out. These are all considered these smartphones. What are phablets? Okay. काफ़ी लोगों ने आप लोगों ने phablets word नहीं सुना होगा, but what is phablets? So basically phablets is which blurs the line between smartphones and tablets.
It's a hybrid version, if you want to call it that way. So it's a smartphone with a display size between 5 inch and 7 inch. 5 इंच से लेके जो 7 इंच तक का जो स्मार्टफोन होता है ना, उसको बोलते हैं फैबलेट्स. The biggest example is the Samsung Galaxy Note. Samsung Galaxy Note जो है, that's considered a phablet. So let's see, Samsung Galaxy Note. आप जैसे कि देख सकते हैं ये काफ़ी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है. दिस इज़ कंसिडर्ड फैबलेट्स. आईफोन के जो एक्स्ट्रा वाले जो बड़े वाले मॉडल्स आते हैं, दोज आर कॉल्ड फैबलेट्स. But Phablets is not as common among consumers. So for CompTIA purpose, just remember, Phablets is anything between 5 inches and 7 inches of display size. Okay. GPS. E-readers we will pass for now. But we'll hop onto the GPS. E-readers I can maybe cover it later, but these are not these are e-readers are kind of like tablets too. But let me just give you a quick example. Hold on, I'll just give you that example right here. E-tablets is ये Amazon के जो आते थे ना e-reader right here. These are Kindle. These are e-tablets or e-readers. They are also tablets slash smartphones. You can say they're not phones, but the main purpose इनका है it's only you can do some reading or some storage of documents and things like that, but you cannot make calls out of this. आप इसमें वीडियो नहीं देख सकते हैं and things like that, what a smartphone or tablet would do. The main difference here between e-reader is electronic reader. It's to read. So जो भी आपको read करना हो, you can do it through Kindle or any type of e-readers. Okay. Now GPS, which is called a global positioning system, is a satellite-based navigation system that provides location and time services. United States government manages 32 total GPS satellites covering the globe. 24 are available for use and rest are backups. GPS systems were designed to require multiple satellites. Receivers use a process called triangulation, which they use to calculate the distance between themselves and the satellite, based on the time it takes to receive a signal to determine their location. 32 GPS के जो सैटेलाइट्स है वो पूरे ग्लोब के अंदर घूम रहे हैं. उसमें से 24 जो हैं are available for use. बाकी के जो हैं वो बैकअप हैं. ये वो सैटेलाइट्स हैं जिसके बारे में हमें पता है. इसके अलावा गवर्नमेंट के पास और बहुत सैटेलाइट्स हैं. we're not talking about that here. Okay, just keep that in mind. So और GPS जो है is designed to have a device, कोई भी डिवाइस हो, to communicate directly to the satellite. Okay. अब अगर आपको याद हो पहले मिजेलिन के और टॉम के और गार्मिन के ये GPS नेविगेशन सिस्टम आते थे. जब ये स्मार्टफोन्स नहीं आए थे तब GPS आते थे. ये जो GPS के जो डिवाइसेस हैं ये सेल फोन के जो टावर्स हैं उससे कनेक्ट नहीं होते हैं. ये डायरेक्टली जो आपके ग्लोब के अंदर जो सैटेलाइट घूम रहे हैं ना, आपके दुनिया के बाहर जो सैटेलाइट, ये उससे कनेक्ट होते हैं. तो ये एग्जांपल है, एक छोटा सा GPS है टच स्क्रीन वाला. और यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं ये सिग्नल्स का बार शो कर रहा है. ये सेल्यूलर सिग्नल नहीं है, ये सैटेलाइट सिग्नल्स है. सेल्यूलर और सैटेलाइट में मेन डिफरेंस यही है कि सेल्यूलर सिग्नल्स जो हैं वो अपनी दुनिया के अंदर जो टावर्स लगे हुए होते हैं ना, ज़मीन के ऊपर लगे हुए होते हैं, ये टावर्स, बहुत सारे टावर्स लगे होते हैं, सेल्यूलर के सिग्नल वहाँ से आते हैं. पर जो सैटेलाइट के सिग्नल्स होते हैं ना वो टावर में से नहीं आते. वो जो दुनिया के बाहर जो सैटेलाइट घूम रहे होते हैं ना
उसके अंदर से ये सैटेलाइट के सिग्नल आते हैं। तो जो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है उसकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत अच्छी है। अब इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास अगर सेल फोन है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ स्मार्टफोन, व्हाटएवर स्मार्टफोन, आईफोन, एंड्रॉइड, व्हाटएवर, आप उसमें जीपीएस यूज कर रहे हैं, आपका जीपीएस चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा। बट अगर आप वही फ़ोन किसी रूरल एरिया में लेके चले जाएंगे, बहुत लाइक अ विलेज टाइप एरिया होगा जहाँ पे सेल फोन के टावर नहीं लगे होंगे, वहाँ पे आपके सेल फोन का जीपीएस नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि सेल फोन जो है वो सैटेलाइट के जीपीएस से कनेक्ट नहीं होता है। एक हाइप अभी उठा था कि आईफोन इज़ अबाउट टू इम्प्लीमेंट सैटेलाइट कनेक्टिविटी टू देयर फोन्स। वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट जो सैटेलाइट से जो कनेक्ट हो सकता है फ़ोन, ऐसे भी आते हैं फ़ोन्स जो सैटेलाइट से कनेक्ट हो। आप किसी भी एरिया में चले जाएं वो कनेक्ट होगा, बिकॉज उसका कनेक्शन सैटेलाइट जो दुनिया के बाहर घूम रहा है ना उससे होता है। सो दे आर मच मोर रिलायबल, वे मोर एक्सपेंसिव। इट्स अ होल डिफरेंट आइडिया बिहाइंड द टेक्नोलॉजी ऑन द सैटेलाइट। ठीक है। Now, smart cameras. Smart cameras have built-in wireless network connectivity for easy picture and video transfer. Smart cameras पहले, अब तो I don't even think it's being used that much, but smart cameras are like this. Samsung का आप देख लें ये। अब इसके अंदर एक तो ऑप्शन होता है आप पिक्चर लो, इसके ये वो रील वाला नहीं है, it has a memory card inside, right? Or a built-in memory which you cannot take out. There are cameras like that too. अब most of the cameras के अंदर वो connecting wire connection होता है, you connect it with the computer and then you can download the videos. But smart camera goes a little bit further. You can connect, आप अपना कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं with wireless connection. You can connect your camera to a network, or you can connect your camera directly wirelessly to your laptop using a Bluetooth technology or a wireless technology or whatever is available. That is called smart camera. Okay. Wearable technologies. So wearable technologies include smartwatches, which is Fitbit is one of them. Wearable technologies. iPhone watch, that's also a wearable technology. Fitness monitor is normally worn on the wrist, and it tracks the user's movement and heart rate. फिर wearable technology के अंदर glasses and headsets भी आ जाते हैं, which is Google Glass. It's pretty it's becoming common now. Users see an augmented reality, which is called AR, projected display a few inches from their face. That was equivalent to looking at a 25-inch screen from about 5 feet away. ये glasses, ये wearable watches हैं, सबको पता है ये, you know, we have smart watches, Android की, Apple की, different types of watches. Then you can customize it, and this is Fitbit. You can customize the interaction with your phone. You can connect it. You can do a lot of things with these smartwatches. And then this is the Google Glass. This is a Google Glass which user sees an augmented reality, like through that little lens right here. You will see a video at a size of a 25-inch screen, and it will be the same as you are watching this from 8 feet of distance. Lot of architectures, they use this for architectures and car designers. Some of the video graphic users as well, to design something, because the AR जो है, augmented reality, is becoming a huge hype now, where you can do a lot of things based on a picture. You don't have to, आपको type करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ touch करने की ज़रूरत नहीं है.
You do everything based on what you see. Augmented reality is where that is moving forward too. उसके अंदर इन्होंने बताया कि उसका सीपीयू अलग से लगा हुआ होता है इसी छोटे से ग्लास के अंदर। ओके, 2 GB मेमोरी होती है, उसमें स्टोरेज इतनी होती है 16 to 12 GB। उसका ग्लास का प्रोजेक्टर प्रिज्म प्रोजेक्टर होता है, 25 इंच स्क्रीन, उसमें आप रिव्यू कर सकते हैं। उसका कैमरा इज एक्चुअली आप देखें 5 मेगापिक्सल्स का कैमरा लगा होता है। उसमें वायरलेस भी होता है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस नेटवर्क से। BNG, G इज लाइक फॉर इज फास्ट कंपेयर टू B। ब्लूटूथ भी है और उसके अंदर आप वायर भी लगा सकते हैं, माइक्रो USB। ये सारी आ जाती हैं वेयरेबल टेक्नोलॉजीज के अंदर। फिर आती है उसके कनेक्शन टाइप्स। Bluetooth is used quite often for connecting mobile accessories to a device, particularly headsets, full size keyboards and mice. जो हमने पिछला भी कवर किया, Bluetooth can be connected to access these devices as well. Bluetooth के थ्रू हम कीबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं, माउस एक्सेस कर सकते हैं, हम ऑडियो ब्लूटूथ के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। वायर्ड USB के बारे में हमें पता है। प्रोप्राइटरी हमने पढ़ा था, जो कि एप्पल का जो थंडरबोल्ट वायर था और द पोर्ट था, वो प्रोप्राइटरी वायर्ड कनेक्शन था। वायरलेस के अंदर वाईफाई हमें पता है। ब्लूटूथ वी जस्ट कवर्ड। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड। Infrared, what is that? Remember that infrared is a short distance, line of sight, point-to-point communication method. Samsung, HTC and LG all include IR support, whereas iPhone does not. Samsung, HTC and LG के फ़ोन के अंदर ये इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी उन्होंने डाली हुई है, और इंफ्रारेड का डिस्टेंस बहुत कम है, 1 मीटर 30 डिग्रीज। लाइन ऑफ साइट, ये दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखेगा तो नहीं काम करेगा। दोनों डिवाइस दिखने चाहिए आजू बाजू, नहीं तो वो आपका डिवाइस काम नहीं करेगा। एंड इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट, मीनिंग एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस ही कनेक्ट हो सकता है। आप एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके फिर तीसरा डिवाइस कनेक्ट करें, ऐसे नहीं होगा IR के अंदर। ओके, देन आ जाता है NFC, इट्स कॉल्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन। सो NFC uses radio frequency, which is RF, radio frequency signals, and NFC devices can operate in 3 different modes. First is called NFC card emulation mode. Okay, card emulation mode क्या होता है? It lets the device act as a smart card. This is useful for making payments and at the site of a merchant who uses NFC enabled register. तो क्रेडिट कार्ड्स के अंदर वो जो वाईफाई के नहीं, वो NFCs के ही बार लगे हुए होते हैं। यू कैन जस्ट टैप योर क्रेडिट कार्ड एंड यू जस्ट मेड दी परचेज। अगर सर्टेन एरियाज में ये अवेलेबल नहीं है, सो आई गिव यू अनदर एग्जांपल। आप होटल रूम में जाते हैं, एवरी होटल इज़ डिफरेंट, बट देयर आर सम होटल हु यूजेस दिस टेक्नोलॉजी NFC। आप अपने रूम के लॉक के ऊपर NFC कार्ड को टच करेंगे, आपका रूम का दरवाज़ा अनलॉक हो जाएगा। That is NFC technology. NFC के जो दूसरा मोड है, it's called NFC read writer mode, which allows the device to read information stored in an NFC tag on a label or poster. read write mode के अंदर वो बेसिकली एक NFC का जो मशीन आती है, you can read and write NFC का card. Let me just show you the card real quick so then you have an idea what it even looks like. ये जो blank cards है ना, these are NFC cards right here. आप इसके ऊपर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, whatever you want. ये जो है होटल वाले अपने होटल के लोगो प्रिंट करते हैं। अब ये जो कार्ड अभी है, ये है रीडर मोड के अंदर, एम्यूलेशन मोड में। आप समझ लें, एम्यूलेशन मोड में है। अभी मुझे इसको रीडर करना है, तो इसकी एक मशीन आएगी, ये है रीडर। ये जो मशीन है, ये रीडर है। इसके ऊपर आप कार्ड टच करेंगे तो वो कार्ड रीड होगा।
ठीक है, तो दिस इज अ रीडर। फिर एक मशीन आती है कार्ड राइटर। पिक्चर थोड़ी साफ नहीं है, लेट मी सी इफ आई कैन गेट यू। हाँ ये रही, ये अच्छी पिक्चर है। ये है रीड, देखिए लिखा हुआ है रीड एंड राइट। तो ये मशीन है बेसिकली, अलग अलग किस्म की मशीन आती है। ये कार्ड आप इसमें स्कैन करें, आप उसके अंदर कुछ भी कोड डालें, जो भी डालना हो आपको, और उस कार्ड को आप एक्टिव कर सकते हैं, ताकि ये कार्ड कहीं पे भी आपको यूज़ करना हो एज अ टू अनलॉक समथिंग और टू लॉक समथिंग, you would need this read writer device to use the card। अब जो कार्ड जो है उसके अंदर भी जो टाइप है रीड एंड राइट होनी चाहिए। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो सीडी के अंदर हमने पढ़ा था। एक आती है सीडी रीड, एक आती है सीडी राइट, एक आती है सीडी री राइटेबल। मतलब री राइटेबल मतलब आप उसको बार बार रिमूव करके राइट कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यही है। तो ये जो हम अभी देख रहे हैं ये है NFC रीड राइटर मशीन and these are NFC read writer card। okay? फिर जो नेक्स्ट आता है थर्ड मोड, वो है NFC peer to peer mode which allows for ad hoc data transfer between two NFC enabled devices। Data rates are rather slow compared to other wireless device methods such as NFC operates at 106 kbps, 212 and 424। It terminates at 1356 megahertz। So इसकी जो frequencies हैं are low, तो इसका जो data transfer rates हैं are pretty low as well। peer to peer mode जो है वो basically two NFC जो device, two NFC की enable device होते हैं उसके बीच में ये दोनों बात कर सकते हैं wirelessly। That is a peer to peer mode। NFC always involves an initiator and a target। To read an NFC tag in a poster, the phone initiator would generate a small RF field that would power the target tag। तो NFC जो है उसके अंदर एक तो होता है इनिशिएटर जो कि कनेक्शन को इनिशिएट करता है, और जो दूसरा होता है वो होता है टारगेट, के जब कनेक्शन इनिशिएट किया तो वो टारगेट किसको उसका वो करे क्या उसके साथ। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, क्रेडिट कार्ड को आप जब मशीन के ऊपर लगाते हैं तो जो आपका जो कार्ड है क्रेडिट कार्ड, उसके अंदर जो NFC की चिप लगी हुई है वो हो गई आपकी इनिशिएटर, क्योंकि आप उसको उसकी ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं। और जिस मशीन के ऊपर आप उसको लगा रहे हैं वो आपकी टारगेट मशीन है, बिकॉज वो आपकी इंफॉर्मेशन आपकी चिप में से ले रही है, ठीक है ना। दैट्स द टारगेट। तो इनिशिएटर क्या है, विच इनिशिएट्स द ट्रांजैक्शन प्रीटी मच। टारगेट इज व्हाट इज अ रिसीविंग एंड। ओके, सेल्यूलर हॉटस्पॉट एंड tethering। सेल्यूलर हॉटस्पॉट इसके बारे में हमने पहले कवर किया था। I will show you one more time। Verizon hotspot करें अगर, this is a hotspot, छोटा सा हॉटस्पॉट है। इसमें ऊपर देखें सिग्नल्स भी आ रहे हैं, आपको बता रहा है कि कौन से किस्म का इंटरनेट कैच कर रहा है, 4G 5G whatever, ठीक है। ये वायरलेस के सिग्नल्स हैं, उसमें बता रहा है कि कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इस डिवाइस से। अगर आपको याद हो हॉटस्पॉट का मकसद ये है कि ये सेल्यूलर से, ये सेल्यूलर के सिग्नल हैं, ओके, ये सैटेलाइट नहीं है, ये सेल्यूलर के सिग्नल्स को इस डिवाइस में कैप्चर करता है, पकड़ता है, और ये डिवाइस उसी सिग्नल्स को वाईफाई बना के एक हॉटस्पॉट क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर इस डिवाइस के अंदर अप टू 15 डिवाइसेस वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 14 डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। सो दैट इज द हॉटस्पॉट, ठीक है। tethering इज बेसिकली सेम थिंग है, लेकिन इसी हॉटस्पॉट के अंदर इन्होंने कनेक्शन दिया हुआ होता है वायर्ड का। ये रहा, ये आप देख रहे हैं USB यहाँ पे, ये USB यहाँ से केबल लेके आप अपने लैपटॉप में लगाएंगे, इसका वायर आता है दूसरा,
वो अपने लैपटॉप में लगाएंगे तो ये वो फिर आपका लैपटॉप वायरलेसली कनेक्ट नहीं होगा, वो आपका लैपटॉप होगा थेथरिंग करेगा वो। पर अल्टीमेट जो इंटरनेट आएगा वो तो सेल्यूलर से ही आएगा ना, वो तो वायरलेस ही आएगा। पर आपका जो लोकल इंटरनेट होगा वो वायर्ड होगा। कोडिंग मैकेनिज्म्स, modified Miller, which is slow speed, and Manchester coding, which is a fast speed. So at the 106 kbps speed, it uses a modified Miller coding. So 106 के ऊपर modified Miller coding, slow वाली delay encoding scheme use होती है. Whereas at faster speed, it uses Manchester coding. It's called phase code encoding. Neither method is encrypted, so it is possible to hack NFC communications using man-in-the-middle attack or relay attacks. NFC के दरमियान में जो भी बातें होती हैं, जो कम्युनिकेशन होता है इस इनक्रिप्टेड नहीं होता है, वो सारा क्लियर टेक्स्ट होता है। तो अगर मैं बीच में एक मशीन डाल दूं विच इज़ कॉल्ड ए मैन इन द मिडल अटैक, मैं दो NFC के बीच के अंदर की बातें कॉपी या देख सकता हूँ। ओके, it's that easy. So NFC is not a secure method, but NFC का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, that's why इसके ज़्यादा concerns नहीं है security के। Because of the limited distance of the RF signals through the hacking is pretty hard to do. As I said, the potential attacker would need to be within a few meters to attempt it. जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कम डिस्टेंस के अंदर आपको होना पड़ता है in order for you to be able to hack it. बट लेट्स से अगर आपका कार्ड चोरी हो गया है, जो भी, उस कार्ड में से वो इन्फॉर्मेशन निकालना कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है इसमें? मोबाइल पेमेंट्स, एप्पल पे आप कर सकते हैं, सैमसंग पे, एंड्रॉयड पे, इसमें सब में ये NFC की चिप लगी हुई होती है। एंड आप टैप करेंगे क्रेडिट कार्ड की मशीन के ऊपर एंड देन यू कैन मेक द पेमेंट विदाउट योर क्रेडिट कार्ड। ये फ़ोन में भी ये टेक्नोलॉजी है। Hotspots, we just covered. Hotspot is a cellular mobile hotspot. You can share your cellular internet connection with Wi-Fi enabled devices such as a laptop or tablet. अब ये hotspot जो है वो इस hotspot की बात नहीं कर रहे हैं ये लोग बात कर रहे हैं सेल फोन हॉटस्पॉट की। तो हमारे सेल फोन के अंदर एक ऑप्शन होता है, आप सेटिंग्स में जाएंगे तो एक ऑप्शन होता है हॉटस्पॉट। आप उसको ऑन करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो हॉटस्पॉट बन जाएगा। फिर आप अपने फ़ोन से दूसरे सारे कनेक्शन वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये है पर्सनल हॉटस्पॉट, ये आईफोन के अंदर जैसे ही आप इसको टर्न ऑन करेंगे यू कैन एंटर एनी पासवर्ड यू लाइक, ताकि कोई भी चलता फिरता इंसान आपके फ़ोन के ऊपर कनेक्ट ना हो जाए। तो अच्छा सा पासवर्ड देके आप इसको ऑन कर देंगे, देन आप अपने फ़ोन के इंटरनेट से लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। ये वो वाला हॉटस्पॉट है। ओके, ये हॉटस्पॉट सॉफ्टवेयर के बेस पे चल रहा है आपके फ़ोन के थ्रू, और ये वाला जो हॉटस्पॉट है ये एक डिवाइस है बेसिकली, जो कि आपको बाय करनी पड़ती है। थेथरिंग जो है वो फ़ोन के अंदर भी होती है, जैसे देख रहे हैं ब्लूटूथ थेथरिंग। आप ब्लूटूथ के ऊपर थेथरिंग कर सकते हैं, आप वायर के थ्रू भी थेथरिंग कर सकते हैं। जो लाइटनिंग फास्ट केबल आती है ना आईफोन की, या USB-C केबल जो आती है इसकी एंड्रॉयड की, वो आप कनेक्ट करें फ़ोन से और दूसरा एंड कनेक्ट करें अपने लैपटॉप से, that will also create a tethering connection to your device. Now, there are 3 downsides to using your cell phone as a hotspot. Speed is one. Multiple devices are now using one cellular connection. आपका सेल फोन सेल्यूलर कनेक्शन यूज़ कर रहा है, आपका लैपटॉप कर रहा है, सारे डिवाइसेस कर रहे हैं, तो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट, यू आर यूजिंग योर सेल्यूलर डेटा प्लान, जो आपका सेल्यूलर का डेटा प्लान है आप वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से कॉस्ट जो है काफ़ी बढ़ सकती है, आप अपने डेटा लिमिटेशन से ऊपर जा सकते हैं। सिक्योरिटी,
देयर इज अ पासवर्ड बट नो सिक्योरिटी ऑप्शंस, ठीक है ना। मैं आपको इसको फिगर 10.7 के अंदर बताता हूँ। नहीं, तो ये वही है। तो ये जो है पासवर्ड हम हमें जो दिखा रहे हैं ये लोग यहाँ पे, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है बट ये सिक्योर नहीं है। मीनिंग, अगर आपको याद हो, मैंने राउटर का जो प्रैक्टिकल किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था WPA2 की इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन, WPA2 की ऑथेंटिकेशन एंड 256 बिट्स की आती इंक्रिप्शन थी उसमें। तो इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है। तो दिस कैन बी हैक्ड, यस, आपका पासवर्ड कैन बी हैक्ड, but the thing with this is that when we use personal hotspot, right, we don't use it for long term. We use it for 10, 15 minutes, 20 minutes, hour, whatever, and then you turn it off. That's the ideal way of doing it. अगर if you have this hotspot on 24/7, then yeah, आप easily hack हो सकते हैं. Password can be hacked easily because इसके अंदर security नहीं है. ठीक है. Tethering क्या है? Tethering is connecting a device to a mobile hotspot. Tethering मैंने बताया, आप USB केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं या तो ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं. Now, headsets. These are the headsets which work off of Bluetooth. अब तो ये headsets बहुत छोटे हो गए हैं, but the concept is the same. ये Bluetooth connectivity from your laptop or from your cell phone, you can connect this, or even in your car. These Bluetooths will connect to any of the Bluetooth devices. Now, obviously, जो इसका distance है is less. जितना इसका distance होता है इतना it will cover. Besides that, it will not work. Speakers, everyone knows what the speaker is, what it does, but Bluetooth speaker भी आते हैं. ये Bluetooth speaker की मैं आपको quickly एक example दे देता हूँ. काफ़ी लोगों को पता होगा. Bluetooth speaker, Google के भी आते हैं Bluetooth speaker, और Beats के आते हैं. ये रहा JBL का, ये भी काफ़ी कॉमन है. सो बेसिकली द वे दिस वर्क्स, आप इसको ऑन करें और इसके अंदर से ब्लूटूथ के सिग्नल निकलेंगे. इसको आप सेलफोन से कनेक्ट कर दें, सेलफोन के अपने ब्लूटूथ से, तो सेलफोन पे जो सॉन्ग्स आप प्ले करेंगे उसकी आवाज़ इस ब्लूटूथ के स्पीकर में से आएगी. बहुत ही बेसिक सेटअप है, एंड it's a good technology, I think, if you're looking for something quick. Game pads. A good game controller can make your mobile device feel a bit more like a gaming console. अब ये गेम पैड्स जो हैं, ये आई कंट्रोल पैड्स और ये गेम पैड्स आते हैं जो आप सेल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं. ये जो गेम के जो पीपल हु आर लाइक रियली इंटरेस्टेड इन गेम्स वुड प्रोबब्ली गेट दैट, बट ऐसे होते हैं, ये भी ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं. इसको फ़ोन से कनेक्ट करें आप, और फ़ोन के ऊपर जो गेम है आप इस रिमोट से खेल सकते हैं. डॉकिंग स्टेशन मैंने बताया है आपको ऑलरेडी. इसका मैं लाइव डेमो आपको थोड़ी देर में करूंगा इसके बाद. बैटरी पैक्स एंड चार्जर्स. बैटरी पैक्स मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, वो भी है पड़ा हुआ हमारे पास. But let me see if I can just quickly show you what this looks like right here. Portable chargers and battery pack. अच्छा सा इसमें कोई मिल जाए. Yeah, this will do. ये काफ़ी एक्चुअली एक बहुत ही अच्छे किस्म का है. इसमें तो आउटलेट भी दिया हुआ है इन्होंने. This is considered like a battery pack or a charger. ये पोर्टेबल होता है. इसके अंदर तो स्क्रीन भी दी हुई है, कुछ में नहीं दी हुई होती है. सो बेसिकली व्हाट यू डू इज़,
ये इनपुट का जो है यहाँ पे आप एडेप्टर लगा के दीवार में लगाएं और इस डिवाइस के अंदर बैटरी लगी हुई होती है। वो 100% अगर चार्ज हो जाती है फिर उसके अंदर वो होल्ड करती है चार्ज। 10,000 mAh की आती है, 20,000, 50,000 उसकी कैपेसिटी होती है, कितनी होल्ड कर सकता है चार्ज। बट जब ये पूरी चार्ज हो गई आप ये इसको लेके ट्रैवल कर सकते हैं, प्लेन में जाएं, कहीं भी ट्रैवल करें। अगर आपका फ़ोन डेड हो जाता है तो आप इस यूएसबी के अंदर उसको अपने फ़ोन को कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको लैपटॉप चलाना है तो लैपटॉप को आउटलेट में प्लग इन करें, देन आप लैपटॉप भी ऑन कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी 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 गुड, स्पेशली व्हेन यूर ट्रैवलिंग। ओके, प्रोटेक्टिव कवर्स, ये भी सबको पता होगा। प्रोटेक्टिव कवर्स इज़ बेसिकली सेल फोन के जो कवर्स आते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टिव केस भी आते हैं, प्रोटेक्टिव कवर्स भी आते हैं। ये बेसिकली केस है, ये आप देख रहे हैं वाइट क्लियर स्क्रीन इसके ऊपर। तो दिस वुड बी कंसिडर्ड ए प्रोटेक्टिव केस. You can also look for phone protective screen, which would be considered a cover, which will look something like this. ये स्क्रीन जो हम लगाते हैं फ़ोन के ऊपर, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम स्क्रीन बीइंग क्रैक्ड। इफ अगर आपसे गिर गया तो आपकी स्क्रीन प्रोटेक्टेड रहती है। तो दैट्स व्हाट दी प्रोटेक्टिव कवर्स आर। क्रेडिट कार्ड रीडर्स, क्रेडिट कार्ड रीडर क्या होते हैं? हम किसी शॉप पे जाते हैं एंड वी आर मेकिंग अ पेमेंट विद द क्रेडिट कार्ड, देन यू स्वाइप योर कार्ड, या तो आप टच करें या तो फिर आप इंसर्ट करें। काफ़ी मेथड्स आ गए हैं। ये वो टच वाला मेथड है, देखें आप खाली टैप करें अपना कार्ड एंड देन यू कैन मेक द पेमेंट। आप स्लाइड करें अपना कार्ड, यू कैन मेक दैट पेमेंट। दिस इज आल्सो अ क्रेडिट कार्ड रीडर। आप उसको इंसर्ट करें, दिस इज आल्सो अ क्रेडिट कार्ड रीडर। सो देयर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड रीडर। ये इन्होंने मशीन बनाई है स्क्वायर टर्मिनल, इसके अंदर आप तीनों चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्लॉट के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं अगर आपके कार्ड में चिप लगी हुई है। अगर चिप नहीं लगी तो आप स्वाइप कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड करें, या तो यहाँ ऊपर उसका टैप का भी आई थिंक ऑप्शन होता है, आप टैप करें, यू कैन पे इट। सो इट्स ऑल इन वन क्रेडिट कार्ड रीडर। ये पेपैल का, दिस इज़ वेरी फेमस। ये सेल फोन में लगता है, सेल फोन के फ़ोन जैक में। अब आईफोन का फ़ोन जैक ख़त्म हो गया है, सो यू नीड एन अडेप्टर फॉर दैट। बट आप फ़ोन के ऑडियो जैक में आप इसको लगा दें, पेपैल की एप्लीकेशन डाउनलोड करें एंड इसके अंदर आप कार्ड स्वाइप करेंगे। यहाँ पे ये इस वाले एरिया और यहाँ के बीच में ना एक स्पेस होता है, कार्ड को आप स्वाइप करेंगे एंड यू कैन कलेक्ट पेमेंट्स थ्रू योर सेल फोन। सो दैट्स व्हाट दिस इज। ओके, memory card readers and everything else. So believe this is where the chapter 10 ends. Chapter 10 थोड़ा सा छोटा था, तो we have covered pretty much all of this and we will come to chapter 11 in next session.